forget about all the data that you get, only focus on stock future. Can you see on 13th May's sheet, FIIs were selling stock future, and finally on 13th of May, there was buying of stock future. This is one thing, that is why one of the reasons why the market started bottoming out. Every time when I study the data, I've only said one thing: don't care about anything else. Put बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Just focus on stock future, and you will see in the coming time why it is so important. This is one thing. Secondly, today the data has shown a U-turn. The data, when I say, means open interest. There has been a complete U-turn in the data. Till yesterday, there was highest call writing. I'm on the 19th of May, Bank Nifty. Till yesterday, we had highest call writing at 34,000. Today, there is there is unwinding of calls, and you can see massive addition of puts has been done. Now, for the 19th of May expiry, you can see the supports: 33,000, 33,500, 34,000. All of them are acting as very strong supports. So the next hurdle is 34,500. But in the coming days, I will not be shocked if the call writing starts to unwind over there. If I open the chart of Nifty, you will see that so many supports are visible. Bank Nifty was still little bit weaker, you can see on the chart. But if you see the chart of Nifty, 15,000 massive put writing, 15,500, 15,800, 16,000. So it is very unlikely now that the market in this expiry will be going below 16,000. So ये open interest बताता है. So that is why one reason why I kept on saying today कि थोड़ा short मत करना, call unwinding. You can see the unwinding. If you see the green going down, ये unwinding हो रही है. आप observe करिए. कल तक 16,000 है highest put call writing. आज पूरी unwinding हो गई है. So आज put writing ही put writing है. So आज complete U-turn आ गया आपको data में. So that is how the market was, and काफी comfortably positioning थी आज market में. 2-3 लोग मैंने देखा today. You got confused. Govind, Arjun. I'll switch on my camera now. I think 2-3 people got confused, right? Govind, Arjun, Abhinav also at one point of time was like, क्यों मैं market को दोबारा कैसे लूँ? But I don't know why you can't re-enter. You know, just a very small thing before I start today's aggressive lecture. You know, when you join a cult, example there, I'm not saying you join a cult, but I was seeing London Files the other day. John Abraham's, ये कौन है? Arjun Rampal's London Files. It is on Hoot. I was watching it with my mother, and there is a cult होता है in that TV series. And cult में क्या होता है? कोई cult आप join करते हो ना, they keep on saying, उनका एक phrase होता है, and they keep on saying that phrase to show that we are a part of the cult. If you want to join the stock market cult, I can give you only one phrase. The bigger is the consolidation, the longer is the building erected. Today I said it in the live market. Please remember it for your life. A lot of things we discuss in live market, आज आपने वो देखा है. Today when the market was consolidating, I'll just hide this Fibonacci, time pass है, बाद में discuss करेंगे. Today during, forget Nifty, I think Bank Nifty was the perfect example. And whoever follows me for a long period of time, हम ये बहुत discuss कर चुके हैं. Longer the consolidation, longer is the building erected. ये हम लोग कर चुके हैं. Secondly, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ. Market moves in phases, and मैंने ये पूरा time today I discussed in the live market. Market expands, contracts, expands. If you are on a bigger chart, you are easily able to understand that contraction. But whenever you are on an intraday chart, 11-1 is contraction. मैं आज लाइव मार्केट में भी आया था, मैंने एक ही बात बोली, प्लीज 11-1 में व्यू मत बनाना. यू माइट गेट सम सेलिंग और समथिंग, बट जब तक ये 11-1 वाला जोन है, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अ ब्रीदिंग स्पेस दैट इज बीइंग गिवन टू दिस मार्केट. एंड वही हुआ मार्केट में. मार्केट कंसोलिडेट किया, एंड इवेंचुअली एज सून एज इट ब्रोक डे हाई, एवरीवन हु वाज शॉर्ट रिकवर्ड, एंड द मार्केट अगेन वेंट अप. So tomorrow I will be discussing cut-off zones, and this entire thing will be very clear. But today what I see on Bank Nifty, is it difficult? मैंने जो बनाया है, मैंने क्या बनाया था? कुछ भी नहीं बनाया था. कल तक क्या था? I will hide these lines. Till yesterday I had drawn this. ये मैंने 2 lines draw नहीं करे थे. Till yesterday I had only drawn this big box. And मैंने आपको एक ही बात बोली थी, that if the lows are protected, आप please short मत करना. क्यों? क्योंकि market is giving you higher lows. If you see the 3 last lows,
This was one low, this was one low, this was one low. Today's low, aren't they all higher lows? आपको मार्केट दिखा रहा है हायर लोज. in technical language, अगर आप CMT की बुक पढ़ेंगे, this is called the shortfall. Shortfall का मतलब क्या है? You are consolidating in a range rather than coming down. You are consolidating, मतलब giving higher lows, मतलब buyer enthusiasm is being witnessed. That is what is called shortfall. Market rather than bouncing from a particular area, वो थोड़ा थोड़ा नीचे हो रहा है. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मार्केट को यहाँ तक आके बाउंस करना चाहिए था, but it is bouncing from a little bit higher level. That is called shortfall. Enthusiasm of buyer being witnessed. It was high time. We already had discussed. ये level बार बार टेस्ट हो चुका है. Remember the iPhone example. If a level gets tested multiple times again and again and again, it becomes weak. iPhone will not break once. It will not break twice. It might not break thrice. But on the fourth time, it has to break. iPhone है भाई. It is not some steel phone. It is an iPhone. It will break. Exactly what happened. And how did it break? Inside candle. Inside candle. ये सब करा हुआ है. Every day you guys ask me, Dewang, what is that one thing that worked? I have said inside candle. I have sent you some write-ups on your WhatsApp. उसमें लिखा हुआ है. Just read the inside candle. If you have, उसमें exact words हैं by Toby. He said that if there is no evidence available, कहाँ support है, क्या resistance है, if there is no evidence, still the inside candle has 70% plus accuracy. He has mentioned it, and those words are in 1980. आज 2020 है. Today I think on 5-minute chart or something on Nifty तो inside candle पे inside candle बन रहा था. I don't think Nifty था, वो बैंक वो था, ICICI बैंक. मैंने आप लोगों को भेजा भी था. It was just maddening. I'll open 15-minute chart, sorry. Today see ICICI bank chart, inside candle, inside candle, inside candle. And the most important part is जो हम कल करेंगे, यार market में this is where the breakout is happening. So unless until the market is going below this, you can sell. Sir, you cannot sell. यहाँ पर there is an inside candle breakout. As long as you are above this point, sir, you cannot sell. If the market is doing this also, you cannot sell because this is where accumulation has happened. Remember my GAN lectures? जब मैंने आपको सिखाया था what is accumulation, what is distribution, ये exactly हो रहा है. Again over here, if you see this candle, this was the low of the bar, this was the high of the bar. When this candle is breaking, you cannot sell if you are not going below this. It is how the stop losses are trailed. If I'm not wrong, if I open super trend, you will see the magic happening there. So how can you tell me? मैंने ये भी doubt clear कर दिया in the later part of the session. Someone asked me, Dewang, there is a bearish divergence on Nifty. मैं एक बार देख लेता what that was. But someone on my WhatsApp, मेरे पुराने बैच के client है, he messaged me, Dewang, there is a bearish divergence on Nifty. So I'll just मेरे पास space नहीं है. I have to use all these things. तो आप लोग देख लेना. तो मैंने एक ही बात बोली थी, यार आप लोग गाड़ी चलाना सीखोगे कि पहले इंडिकेटर यूज करोगे? I assuming you have listened to my voice note on Telegram. आप लोग पहले गाड़ी चलाना सीखो, which is your price action. You can't first focus on signal green है कि red है, जो आपका इंडिकेटर है. पहले गाड़ी चलाओ. अगर आपको आज सुपर ट्रेंड देखो, क्या ब्रिलियंट था. 1 मिनट के लिए शॉर्ट नहीं बोला उसने, कहता keep on flowing. This is why I said there is no other tool better than super trend. Also, rule of 3 is being happening here. Rule of 3 मतलब क्या है? If you're in a strong trending market, only 2 or 3 candles can be greeded. Exactly was shown here. So I hope that market was clear today. Yesterday I was very frustrated. I will be very honest. कल मैं बहुत frustrated था. क्या है यार market? I was in 1.5 lakh profit, then 0, then 90 profit, then minus 40, then 50 profit, then minus 40. Eventually I closed at minus 40. I said क्या है? I was right in the direction, but clouds were quite overcast. Today when things became clear, we had to be there. कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था, इफ यू आर ओपनिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू आर ओपनिंग अबव रेजिस्टेंस, अगर आपका जो गैप अप है, फॉर एग्जांपल इट इज ओपनिंग अबव रेजिस्टेंस, देन मार्केट यहां तक नहीं गिरेगा. इट विल बी ओनली कंसोलिडेटिंग इन दिस एरिया. बैंक निफ्टी में थोड़ा सीन अलग हो गया. आई डोंट नो व्हाई. प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. जनरली क्या होता है, इफ यू आर ओपनिंग अबव रेजिस्टेंस, आप यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाते हो. सो ओवरऑल इसने कर दिया. इफ यू सी, इसने गैप फिल नहीं किया था, एंड दैट इज वन वेरी वेरी पावरफुल थिंग. इसने आज गैप फिल नहीं किया था. सो ऑल दीज थिंग्स वर्क वेरी वेल. आई होप टुडेज मार्केट वाज क्लियर. आज का मार्केट में कोई डाउट तो नहीं है गाइस? इज इट क्लियर? 15-minute मैग्नेट वॉट, वो तो हाँ ऑब्वियसली है, वो तो ठीक है. एक मैं आपको जस्ट वन थिंग आई वांट टू जस्ट पुट इट. Nifty daily magnet broken. I think Kapurva का भी वो doubt है. I'll explain.
देखो एक बात को समझो, मैंने एक स्मॉल कैप का, आई विल जस्ट ओपन निफ्टी स्मॉल कैप चार्ट। मैं आज क्यों आपको फुल डे बोल रहा था प्लीज मत करना, सेल मत करना, सेल मत करना, मैं ये क्यों बोल रहा था समझाता हूँ। इफ यू ओपन द निफ्टी स्मॉल कैप चार्ट, क्या चार्ट है आज, एंड दिस इज व्हाई यू ऑलवेज अंडरस्टैंड स्मॉल कैप्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स। ब्रेथ बदलेगा तब मार्केट बदलेगा। देखो स्मॉल कैप ने 12 पे हैमर बना के रिवर्सल किया था, बट वो निफ्टी ने नहीं किया था। सो स्मॉल कैप्स गिव यू अ प्रीएम्प्टिव कि हाँ भाई मार्केट बॉटम कर रहा है। सो आप एक बात को समझो, डाउट है, मैंने मैग्नेट्स व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग, आई एक्सप्लेन्ड वन थिंग, यू विल एक्ट ऑन द मैग्नेट्स द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल व्हेन द मार्केट वेंट अप, this is the first time you can go sell over there, but you will not act on the magnet on the second time because that is no longer a magnet. Magnet is when it is a virgin level, जब वो टेस्ट नहीं हुआ। Secondly, I talked about if the market is going up in a single shot, that is where it is more powerful. I have given one rule that if a market is consolidating, उस केस में नहीं लेना, बिकॉज दैट इज नॉट अ सिंगल शॉट। आपको वो पॉइंट याद है कि नहीं याद? आई वांट टू नो। मार्केट को सिंगल शॉट रिवर्स करना चाहिए, रिवर्जन करना चाहिए। इफ यू आर ऑब्जर्विंग द चार्ट ऑफ निफ्टी, कैन यू नॉट सी अ कंसोलिडेशन? आपको दिख नहीं रहा कि मार्केट ने कंसोलिडेशन करा हुआ है फिर मार्केट बढ़ रहा है? हमें वो चाहिए ही नहीं। दैट इज नॉट द केस टू वर्क ऑन अ मैग्नेट। सेकेंडली गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, मैग्नेट भी क्या है? इंडिकेटर है ना। इफ आई से इंडिकेटर, इट इज अ टूल। तो पहले आपको यू हैव टू नो द प्राइस एक्शन। आज मार्केट में क्या हो रहा था? शॉर्ट कवरिंग। एक प्लीज बात याद रखना, जब मार्केट में बाइंग होता है ना, व्हेन देयर इज अ बाइंग इन द मार्केट, आपने मैग्नेट यूज करना है, करो। मतलब एक कोई फ्रेश बाइंग हो रही है, एक मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पर जो करना है करो। बट मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग है, मतलब कॉल्स अनवाइंड हो रही है, पुट राइट हो रही है, पूरी अगर गेम बदल रही है, वहां पे केयरफुल रहो, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग इज लीथल if you are in the wrong direction. आप लोगों ने वो आज देख लिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो शॉर्ट कवर लीथल होती है एंड मार्केट में रुकती नहीं है वो। सो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट सो मेनी डेज, मीन रिवर्जन आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा, वो आज आपको आ गया एंड बहुत लीथल आई है। इट्स वेरी वेरी। तो जस्ट अभी इंटरप्ट मत करो, नोट डाउन योर डाउट्स एंड आई विल आस्क देम लेटर। सो आज की ये पूरी मार्केट थी। सो ट्रेंड रिवर्सल कब आता है? ट्रेंड रिवर्सल से डबल बॉटम पे आता है। प्लीज ये अब गलती मत करो। मार्केट में आज एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, इसका ये मतलब नहीं है ट्रेंड रिवर्स हो गया, मे बी हो भी सकता है, बट जब एक डबल बॉटम बनेगा, ये फर्स्ट पुल बैक है गाइस, इट विल इवेंचुअली गेट सोल्ड इनटू, सो दैट विल टेल यू ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्सल इज डिनोटेड बाय डबल बॉटम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक today give you short term reversal. So abhi ek short term reversal hai, and now since we have gone above the super trend, it is quite possible that a double bottom can be formed in the chart. So yes, a 1 hour chart has given you double bottom, wo pata hai hame, but a daily chart also will be giving in the coming days. ये first pullback है, it will get sold into and it will recover, but for the time being ज़्यादा बड़ा fall in the near term, especially this expiry दिखता नहीं है मेरे को. So my positions will be placed accordingly. यहाँ तक clear है guys? डेटा को मैंने डिस्कस किया, ओपन इंटरेस्ट डिस्कस किया, प्राइस एक्शन डिस्कस किया, इस तरह हमने ट्रेड लिया। सो टुडे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नहीं करना। या कमिंग टू द प्राइस एक्शन, जस्ट वेयर इज माय बैंक निफ्टी चार्ट? आई विल ओपन द बैंक निफ्टी चार्ट। निफ्टी का तो चलो कोई बड़ा प्राइस एक्शन था नहीं, बट बैंक निफ्टी का प्लीज मेरी फॉर्मेशन को समझिए, मैंने क्या बनाया है, प्लीज समझिए। टुडे दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. What have I done? Number one, I have marked higher lows, right? What have I drawn? I have drawn a rising wedge. You have done rising wedge from Himalaya. Rising wedge, how do you draw? You have to join two high points. You have to join two reversal points. That is what I have drawn. Rising wedge can break downwards also, most likely breaks downwards, but like a descending triangle, it can break upwards also. If a triangle is breaking upwards, right? उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है the highest reversal point, मतलब जो first reversal point था and the next reversal point, the maximum vertical distance in the range is what will open up. तो मैंने यही मार्क करा है, which is coming to 34,800. At the same time, the maximum distance, ये हमारा एक बॉक्स ब्रेकआउट भी है, रेक्टेंगल ब्रेकआउट भी है। कितना है ये? अराउंड 700-800 पॉइंट है।
that will open up. So approximately they are coming the same distance. 50-100 पॉइंट का फर्क है. This is why मेरी आज साइकोलॉजी समझो. This is why when the next breakout was about to happen, मैंने immediately 19th में exit किया and at the same time 26th में aggressive at the money short किया. मेरा व्यू समझो, मैं aggressive हो गया. But till yesterday मैं थोड़ा out the money short कर रहा था. If you have noticed, we were here, I short 33,500 puts. मैं काफी out the money put short कर रहा था. But today when I saw you're getting a consolidation breakout, wedge breakout, rectangle breakout, I said, give it time and के लिए खेल रहा है, 4-5 लाख के लिए खेल. Today that was a very wise decision. Why? Because after this breakout, the 33,500 put जो मैंने पहले लिया था, that decayed from 130 to 70 rupees. But जो मैंने 34,000 put short किया, that decayed from 520 and currently at 380. मतलब 140 point decay I got with my change in stance. So Abhinav, if you are watching, I took a second trade. Why can't you? Confidence को लाओ. Market difficult नहीं है. भरोसा रखो. Entry मिलती रहेगी. कल भी मिल सकती है. If the market opens flat and breaks out, कल भी मिल जाएगी entry. But आपको घबराना नहीं है. The biggest problem is हाथ अटक जाते हैं. Today I saw अर्जुन गोविंद में देख रहा था. आपके हाथ अटक रहे थे. Because आपका एक व्यू था. Maybe शायद कल market gap down दे दे. I don't know. But आपका आज हाथ अटक रहा था. वो bias मत लाओ. मेरा भी अटकता था. I remember when the market, I want the market to fall down, but market is not falling down. वो bias रहता है. And you miss out a lot of trades. This is the reason I try to stick these days to intraday trading. अगर आप observe करोगे, every day I am making it a point to do intraday trading. Anyways, let us discuss about tomorrow's market for 5 minutes. ज़्यादा time pass नहीं करेंगे. 5 minutes, guys. कल market बताओ. कौन बताएगा? Please unmute yourself. क्या करना है कल? Nifty Bank. कौन बताएगा? You can unmute and talk. Please raise your hands. Anyone? I would like you all to give your comments. And come a minute. Hi Dewang. Yeah. So if market opens flat or maybe small gap up, then it may continue the trend. It can go long. Okay. If it opens gap down, then again it will be volatile. So we should wait for. It will be volatile. So on the daily chart, what will the candle look like? On the daily chart. Maybe inside bar or inside. Anyone disagrees? Because I don't. So मैं आपको देखो समझा देता हूँ दोबारा. मार्केट में नंबर 1 या एक तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है. चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको छोड़ देते हैं. देखो राइट नाउ समझो बात. While open the open interest, please एक just understand. 16,000 is highest put writing. On Bank Nifty, highest put writing is placed around 34,000. Sorry, और चेंज हो गया 34,000. इसका क्या मतलब है? It is also coinciding. ये आपका last swing low है. So unless until market is doing some price action, क्या कहने का चाहता हूँ? मार्केट वापस जाता है, इसको ब्रेक करता है, ऐसे करता है. Unless until this is happening, हमने अभी शॉर्ट नहीं करना. प्लीज अग्री विद मी. अभी टॉप मत निकालो. टॉप कब निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे. समवन सेड SGX निफ्टी इज डाउन 80 पॉइंट्स. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. अभी है ना, कल देखते हैं क्या होता है. मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ, कल शायद इनसाइड बार बन जाए. क्यों होता है ये अभी समझाता हूँ आप लोगों को. एंड बहुत पॉसिबल है कि कल इनसाइड नहीं बनेगा. डिस्कस करता हूँ. देखो, इफ द मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट, एज रवि शंकर सेड, इफ द मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट, यहाँ पे गैप, यू कैन ऑलरेडी सी यू आर एट अ गैप ऑर्डर. सो अगर ये गैप ऑर्डर ब्रेक करेगा, देन मार्केट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स टारगेट नंबर 1 34,500 राउंड नंबर कॉल राइटिंग, एंड देन टारगेट नंबर 2 34,800. ये आपके दो टारगेट्स खुल जाते हैं. बट अगेन दिस इज ओनली इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड ब्रेक्स इट. याद करिए थोड़े दिन पहले when you were at 34,800 हमने क्या डिस्कशंस करे थे. वही सेम टाइम आ गया कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस पे है और फ्लैट ओपन करेगा, वो तभी ब्रेक करेगा. अदरवाइज इफ द मार्केट इज एट रेजिस्टेंस और अगर वो गैप डाउन ओपन कर रहा है, तब वो ब्रेक नहीं करेगा. एंड मार्केट में ये सेलिंग कंटिन्यू क्यों करी है? बिकॉज इसने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया. All these points become very important for you to understand.
बात को समझिए, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है एंड इफ इट इज ब्रेकिंग द हाईएस्ट, इट विल बी अ सिग्नल टू गो लॉन्ग. इतना बड़ा टारगेट मत लेना बिकॉज टुडे वाज अ वाइड रेंज बार. Automatically you already know my rules. Expansion of volatility is followed by contraction. तो अगर आज का टारगेट 200 था, कल का टारगेट 100 आ जाएगा. कब हो जाएगा? So the flat market breaking will give you a good momentum on the upside. Trail it and accordingly make money. But if the market tomorrow is opening gap down, you can see a couple of things happening here. जब तक आपके ये last swing lows 33,800, 34,000 intact हैं, हम selling नहीं करेंगे. So it will more likely than not give you some kind of volatile day because ऊपर resistance है और नीचे भी support है. So you might be trapped between 33,800 and 34,300. So you will get an inside day. Accordingly आपको trade करना है. But aggressive selling नहीं करेंगे. Aggressive selling हम तभी करेंगे when a price action is seen something like this and you are entering back into the box. समझ गए? So yes, Sakshi 1030 could make a bottom and then try to recover. So for me it will be a volatile day. So I will not be very interested looking at short opportunities. तो अभी हम लोगों ने short देखना नहीं है. अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, निफ्टी का लास्ट स्विंग लो क्या है 16,100. तो अगर आप 180 पॉइंट्स गिरो और यहाँ भी सपोर्ट है, तो मतलब हम शॉर्ट तभी कर सकते हैं अगर मार्केट इस तरह कुछ करे. मतलब it goes down, pulls back, again goes down, trades below 16,100. Only then some kind of selling I will plan. Otherwise not. So basically that means I will be waiting for tomorrow's candle to decide whether I sell or not. But मैं कल selling का व्यू लेकर मार्केट में नहीं जा रहा. SGX निफ्टी चाहे अभी जो मर्जी बोले, I believe today one of the Fed governors is coming. Maybe because of that it could be the volatility. But again I'm currently fine. डाउट है कोई अभी तक आप लोगों को? So yes, Raj is saying, can we again start to go long at 16,000? So I believe yes, that should be a comfortable strategy because currently we have broken out and 16,000 looks like a very strong support. So I would say currently, as long as it is a first throwback, dips towards 16,000 should be opportunities to go long in the short term at least. But if you get price action, consolidation and breakdown below, then automatically we will have to start to exit our longs. So that is my view. Currently I will be placing a buy on dip emphasis. That is my plan. अगर आप daily chart देखते हो, if you look at the daily chart, what does that mean? Fresh buying is happening from 15,900. मतलब इस लो पर सबका stop loss है. तो कायदे से जो बंदा पोजिशनल लॉन्ग है वो तो निकलता ही नहीं है बाहर. इंट्राडे में आप शायद घबरा के निकल जाओगे, बट समवन हु इज अ पोजिशनल लॉन्ग वो तो इसके पहले नहीं निकल रहा. सो घबराने की जरूरत नहीं है अभी तक. If I go to the Bank Nifty chart, I don't know where my Bank Nifty chart is, but if I go on Bank Nifty chart, what is the daily candle like? The daily candle is low is 33,800. तो इसके नीचे ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए शॉर्ट का भी फोकस नहीं है. You might get an inside day, volatility बनेगा, बट मुझे अभी शॉर्ट नहीं करना. ये मेरा प्लान है. So कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. I hope things are clear. कुछ ज्यादा आज खास है नहीं मार्केट में डिस्कस करने के लिए, बट एक ही चीज बोलूंगा टू पीपल लाइक गोविंद, अर्जुन, अभिनव, एक्सेट्रा. आज एक रैली आया है, कल शायद इतना बड़ा रैली नहीं आया. प्लीज वो फोमो मत लेके आना. मतलब लोग इसीलिए पैसा हारते हैं बिकॉज टुडे दे वांट टू रेप्लिकेट टुमारो, बट वो होता नहीं है बिकॉज वी नो एक्सपेंशन फॉलोज इनटू contraction and movements of dull trading. So that is very possible in the coming days. And if the market turns dull, let us say the market starts to turn dull, you already know my rules. Rule of 3 days. Market can turn dull for 3 days and then it can recover. ठीक है? Arya, one doubt I will take. You have some doubt? Please tell me. Yes, Bhaiya. My doubt is a little bit on the psychological side. You've been telling us for a long time right now about how I'll use the word chameleon. You've been kind of a chameleon. You change your views very aggressively at point of time. But how do you keep this mindset when you don't have a biasness at certain points of time? Even if you have one, you change it at an instant point. So I would say the best is to hold trade for shorter period of time. That will really improve in such volatile scenarios to change your mindset. For example, today when the market is clearly breaking out of a box it has made for the past 3-4 days, why don't you get bullish? I understand overall globally everything is bad, but why will you not get bullish?
Same thing for Nifty. If you're breaking the 16,000 barrier, which has been tested many times, you have to change scenario. So you might not be long where I went long. Maybe because I'm a little bit more experienced, but at least over here on the inside day, you have to go long because it is a clear breakout. So these things you have to understand. I would say when there are times of choppiness like this, be out of positions, and when clarity comes in and hop in fast, hop in aggressive. So let me just discuss a couple of concepts that are important. मैंने आपको 2-3 readings भेजी हैं. I want to open that right now. I don't know where that went. I just open. I don't know where it went यार. क्या चीजें हैं? Reading. So the first, मेरे को चलो याद है. The first reading I have sent you. I'll just forward it again once. The first reading I have sent you is about. आपने देखा होगा. Very unusual game, but something I'm reading again. All these things are in the CMT book. So please आप उसको एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप दोबारा fresh पढ़ सकते हैं. You can get the PDF online or something. Just one second, I'm sending the files again. So if you have not read it, एक बार आपको मैं पढ़ा देता हूँ. ये important है because why I'm teaching it, because this can be seen in the next coming days. So I want you to be alert. अब जैसे मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ the matching low candlestick pattern, आपने आज देखा है how it worked. By the way, हमने एक चीज पढ़ी थी 520 crossover. Have you seen how beautifully it was seen on Bank Nifty? By the way, आप ये चीज भूलना मत. हमने जो चीज पढ़ी थी मैंने आपको लाइव दिखा दी है. And we have discussed it in the Santiago group also. If I open Bollinger Band, hide everything. ये देखो 5 and 20 crossover 16th में हुआ था. And ये हमने लाइव डिस्कस भी किया है. आज देखो रैली एग्जैक्ट 5 ट्रेलिंग. आप एग्जैक्ट ट्रेलिंग देखो कितनी बढ़िया चीज थी. और हमने ये कंप्रेशन भी डिस्कस किया था व्हिच आई विल डिस्कस इन माय बॉलिंगर पार्ट सेशन. सो अब एक चीज याद रखो, आप ये यू आर सीइंग ऑल दीज थिंग हैपन इन द लाइव मार्केट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू इन द कमिंग डेज व्हेन दे हैपन अगेन, प्लीज स्टार्ट टू एक्ट ऑन देम. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ कपल ऑफ स्क्रीनशॉट्स. वो कहाँ गए यार? आई डोंट नो व्हाई माय MacBook is downloads. I think यहाँ पर होगा. Yeah, sorry, I got it. Okay, so inside bar ये नहीं है. VIX. Yes, this is one very important thing, guys. I hope you can see my screen. I have already sent it to your WhatsApps also, so please आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो whatever you want. देखो, this is one very important thing. ये मैंने आज पढ़ा है. Very, very powerful. It is given by Larry Connors in 1998. What is VIX? आप लोग मुझे पूछते हो देवांग, what is VIX? बहुत सिंपली लिखा है, VIX is a reflection of anxiousness in the market. मतलब लोग कितना घबरा रहे हैं, they are getting scared. So whenever market is going down, VIX बढ़ता है. Why? Because when market is going down, fear increases, anxiousness increases. वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Secondly, it is also an indication of complacency in the market. Complacency मतलब like what today गोविंद को हुआ था. अब market बढ़ रहा है और VIX गिरेगा. Why is VIX falling down? Because of anxiousness नहीं है. People start to become complacent कि चलो अच्छा है बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो ना. Like that. Larry Connors has given you some very interesting short-term observation. How you can look at the volatility index chart and use those observations and trade it on the Nifty chart or Nifty Bank or whatever you want. ये बहुत interesting है, please पढ़िए. अभी तक I have given you one very simple thing जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है. What have I taught you? I have taught you that if I open the volatility index chart also side by side, just one second. I have explained you one thing, that whenever Nifty will make bottom, VIX will make high, and whenever Nifty will make high, VIX will make bottom. So I can show it to you also. अब जैसे on the 5th of April, Nifty has made a high. मतलब यहाँ पे complacency has to be at the lowest. So on the 5th of April, you will see that the VIX was around the lowest levels. आपको दिख जाएगा 5th of April तक अगर आप observe करोगे market गिर रहा है and यहाँ से bounce किया, तो that is how the VIX is correlated. काफी it's an exact negative correlation. When the VIX is falling down, complacency बढ़ रहा है, market is going up, and when the VIX is going up, like these days, the market is going down. So ये तो आपने पढ़ लिया है. But this guy Larry Connors, he has given some crazy rule, and मैं इसको देख रहा था. Of course, I have not tested it yet.
I have not really right now exactly tested it, but I have just seen the result. It is amazing. He said it. कहता you can combine VIX with an oscillator formula to determine overbought oversold. So for example, जो आप लोग चीजें करते हो on the RSI कि Nifty is getting oversold, Nifty is getting overbought, you can do the same on the VIX, which is fine. That is no big deal. वो आप लोग already करते होगे. He said a very good strategy. I'm zooming it in for you guys. He said a very general strategy is to look at a VIX using a moving average. एक बात को समझो. The volatility index right now, and if you see it and compare it in 1990s, बहुत difference होगा because market condition तब फर्क थी, आज फर्क है. But if you are adding a moving average, things become clear. It dampens those changes. क्या मतलब है इसका? Remember the other day when I was teaching you those 5 and 20 crossovers, I told you put a 200 moving average, things will become clear. You will filter out your signals. Same thing over here. What Connor said is, कहता use a 5% deviation from a 10-day simple moving average. He has said, I'm again repeating, I'll show it to you with examples. कहते daily India VIX for example, put the daily chart of India VIX. Use a 10-day moving average and use a 5% deviation. मतलब क्या हो गया? I will put an envelope. जो मैंने सिखाया था कल, आपने एक 10 DMA लगाया plus 5% minus 5%. And he said, ये बहुत important है. He said if the VIX is below the SMA by 5%, ये मैं समझा देता हूँ. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेस हैं. मुझे पहले एक बात बताओ, व्हाट एम आई डूइंग? मैं ये कर रहा हूँ ऑन द एनवेलप जो मैं सिखा चुका हूँ. आई एम पुटिंग अ 10 डेली मूविंग एवरेज एंड आई एम पुटिंग अ डेविएशन नॉट 5%, लेट अस से चलो 5%, नो प्रॉब्लम, ये डाल देता हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द रेड लाइन इज द 10-day मूविंग एवरेज and this envelope is a 5% deviation from moving average. मतलब मेरे को ये बता रहा है कि when is the VIX moving far away from the extremes. मुझे एक चीज प्लीज सोच के बताना, हमारा काम क्या है as a technical analyst or as a trader? What do you want to achieve? Can anyone tell me? What is that one thing that you want to know? Forget, let's say you know everything in technical analysis. ये आप सारे tools को use करके क्या achieve करना चाहते हो? Can anyone tell me? What is the basis of tech trend? Yes, trend. अगर आपको trend पता है, बाकी तो आप उसको यूज कर रहे हो ना. If you know the trend is bullish, you want to get a dip and buy the trend. If you know the trend is bearish, you want to get a rise and sell the trend. यही चीज मैं आप सिखाने लगा. बहुत सुनना आराम से. What we are doing is, हम एक निफ्टी के डेली चार्ट पे आप 200 मूविंग एवरेज लगा लो. So you will know that the market is trending upwards. Right? If you know that the market is trending upwards, what do you need? You need dips and you need to buy those dips. So what I am teaching you is, when do you know with respect to VIX, when can you buy those dips? मैं यही सिखा रहा हूँ. समझ गए? ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप कर क्या रही हैं. So what he has said, Connors has said, how do you identify those dips? Or in the current scenario, how do you identify मुझे कब वापस सेल करना है? So यहाँ कहते हैं, if the market, please see my underlined area, if the market is moving above the 200 DMA, मतलब market bullish है, what do I need? I want dips. So अगर VIX क्या करेगा? बताइए. If the market is going down, अगर market थोड़ा dip कर रहा है, तो VIX को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर की नीचे? Start rising. It will start rising, right? So what he says is, अब सुनना, if the VIX is below that moving average deviation, और जो 5% का था, इसका क्या मतलब है? मैं एक बार, थोड़ा complicated है, मेरे को एक बार समझाने दो. ये प्लीज मैं आपको इंडिया VIX का चार्ट दिखा रहा हूँ, right? I am hiding everything. I have just put 10-day moving average and a 5% deviation. In this chart, what can you see? The VIX is continuously trading below. ऐसे पूरा टाइम ये 10 DMA के नीचे ही रह रहा है. तो अगर VIX गिर रहा है, इसका क्या मतलब है? कि मार्केट क्या करेगा? Going up. It will keep on going up. It will not fall. It will keep on going up. But the question is, when can you buy? Market में dip कब आएगा? Market will give you a dip only if the VIX goes up. Yes or no?
If the VIX is going up, only then the market will give you a dip. So what Connors is saying, market आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. कहता अगर तो VIX नीचे के बैंड में घूमता जा रहा है, it is below, मतलब मार्केट स्ट्रांग है, it will keep on going up. But I cannot go long in this market. इस मार्केट में कोई डिप ही नहीं है. Yes or no? Because कभी VIX बढ़ा ही नहीं है ना more than proportion. If I go to the you will see that in the month of March, जहां हम लोगों ने लॉन्ग किया था 60,000 कॉल्स, यहां पर तो कोई डिप ही नहीं आया. In the entire 1 month, कहां मुझे डिप दिखा बताइए, कोई डिप ही नहीं है. So that is why everyone had FOMO कि मार्केट में डिप ही नहीं है, क्या करे. And this is exactly what the India VIX shows कि मार्केट में there is no dip that is coming in. Because dip कब आएगा? Can anyone now try to make a correlation? वो डिप कब आएगा जो मैं खरीद सकता हूं? सोचो, क्या लगता है? At 10 AM you are saying, मैं आपको डिफरेंट बात बता रहा हूं. डिप क्या आएगा? अच्छा डिप चाहिए मुझे. I want a good dip. अंकित, you are right. Above the envelope. मुझे सोच के बताओ, सोच के बताना प्लीज. मार्केट अप ट्रेंड में है, फिक्स को भूल जाओ. मार्केट अप ट्रेंड में है. ये RSI का चार्ट है, राइट? RSI 50 पे आता है, आप लोग बाय करते हो ना. यू लो ना कि RSI कम 50 के बाय करूंगा. सेम थिंग यहां पर मैं कर रहा हूं ना. मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं व्हाट इज द मैक्सिमम डिप दैट कैन कम. सो व्हाट इज कॉर्नर सेइंग? कॉर्नर्स इज सेइंग इफ, ये देखो, ही इज सेइंग अगर अप ट्रेंड है, if the ratio is above 5% or better, if it is above 10%, it is usually an excellent time to buy. क्यों? मार्केट ऊपर जा रही है, आपको more than normal dip मिल रहा है. VIX तो वही दिखा रहा है ना आपको. If VIX is going, कहता 5% छोड़ दो, कहता आप ट्राई करो इसको deviation 10% कर दो. Because the lower number we are using, we can get false dips, right? अगर मैं पूरा 10% कर देता हूं, so मेरी और कम हो जाएगी. You can see it is coming in the envelope. So if I can see market uptrend में है, and if then in that case VIX is going ऊपर, that is a place where you can try to buy. समझ आएगी तो समझ नहीं आया? ये बताओ, समझ आएगी सब ऊपर से? देवांग, लास्ट पॉइंट कुछ एक्सप्लेन करना दोबारा. लास्ट पॉइंट देखो, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? I want a dip. I know my trend is bullish. I want a dip. As simple as that. If the trend is going up, I want a dip. Either you use RSI to get 50, you can use 20-day moving average to get that 20, you can use some cross, whatever strategy you can use. Fibonacci. I am using another way on the VIX. If the VIX market is going up, so VIX will fall down. If the market wants to give you a dip, VIX has to go up. So if the VIX is going up, there will be a level on the VIX. That will be a top on the VIX. If I achieve a top on the VIX, meaning bottom of the market, if VIX starts to fall down, market starts to go up. So my job is trying to find out what that top on the VIX can be. So what Larry Connors is saying, if you are going outside the band, आप कहीं अगर बाहर निकल जाओ, that is a abnormal fall. क्योंकि market तो bullish है. If you go above the band, because I'm using a 10% deviation, तो market तो कुछ ज्यादा ही different कर रहा है. It is quite possible that can become the bottom of the market. Top of the VIX, bottom of the market. And if RSI confirms, if some indicator confirms, take an aggressive trade there. अब समझ आया कि नहीं आया? क्लियर. यार ये देखो, आप you already know market bullish था. आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Throughout this time you were above 200-day moving average. पूरे टाइम पे. अब मुझे आप सोच के बताना, ये Can you see VIX went up? मतलब मार्केट में बॉटम हुआ कि नहीं? क्या बढ़िया चीज है. I am looking only at those times when there is a deviation. ये टाइम ऑब्जर्व करो. ये मार्केट बॉटम क्यों बन रहा है? Because VIX went up above the 10%. क्या बढ़िया चीज बताई उसने. This reminds me of reading Gann. In Gann's work, every line is crazy. And here also, and I'm reading CMT. Because we are learning from the experience of these guys who have denominated the 1980 markets, 1990 markets, and they're working. So he is saying, Apurva is saying 25 April, it would have indicated to buy. 25 April क्या है? 25 April to buy. तो अगर आप यहाँ buy करते हो सर, तो आपको bottom मिला नहीं यहाँ पे. You are basically, यहाँ पे जो भी है, you got value from
20 वही है ना, हाँ यहाँ पर आप देखो 25 अप्रैल तो सही तो है, ऑन द 25 अप्रैल आपका जो क्लोजिंग था 16,950, उसके बाद मार्केट 400 पॉइंट वहां से रिकवर किया पूर्व, हाउ इज इट रॉन्ग? 25 अप्रैल सही हो गया ना? इवेंचुअली यू ब्रोक दैट 17,100 200 MA, यहां पर 200 MA 17,100 पे था, तो ब्रेकिंग इट देन इट विल रिवर्स. अब मुझे बताओ, if you want to sell as per this, when will you do so? Because currently we are below the 200 MA. अब मैं कब बेचूंगा? अब मतलब yeah, so right now rise is coming. When can I sell? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या लगता है? जब विक्स बेसिकली एनवेलप से नीचे क्लोजिंग दे देगा. हाँ, when the VIX is giving closing below envelope, that is a place where I will start to look for some signal to sell. कोई RSI, कोई डाइवर्जेंस, कोई बॉलिंगर बैंड, कोई 20 MA, जो भी आएगा, that is where we will sell. मुझे मजा आया पढ़ के. I thought I will share because जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, it is doing very well. आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ. आप कोई भी ये देखो, this is the bottom. ऑब्जर्व करना, 20 दिसंबर जो बॉटम बना था, हम तो कितने पागल हैं, हमें पता ही नहीं था ये हुआ. आज देखो पता चल रहा है, मार्केट ने ये बॉटम बनाया, it gave a bottom over here, विक्स बाहर था कि नहीं था? क्या बढ़िया चीज है. समझ आया कि नहीं समझ आया गाइस? अभी तक मार्केट पूरा सेल क्यों चल रहा है? यू आर ऑन द अपर बैंड, आप ऊपर चल रहे हो, नीचे तो कभी आ ही नहीं रहे हो. तो अगर विक्स इज गोइंग अप, मार्केट विल फॉल डाउन. ये चीज हो रही है सारी. ठीक है गाइस? देवांग जो लास्ट कैंडल है विक्स की, ये थोड़ी abnormal है क्योंकि विक बहुत लंबी है. This is like those freak trades that we see ना. Right. इसमें होता रहता है. I don't know why it happens. I haven't done a detailed study here, but ये होता रहता है. So I would say closing का wait करा करो, आप समझ आते हैं. Okay. So the only thing is, अगर clear है please let me know in the chat. The only thing is, do you use a 10% deviation or a 5% deviation? ये आपको देखना है. ये मेरे को नहीं पता because I will test my system. I think the bigger is the percentage, the less false signals will be there. इतना तो सबको पता ही है. So I think by for now मैं 10% लेके चलूंगा. So this is something I haven't done it before and I was just happy. रौनक, please बताओ. You just told रौनक you just told that VIX above the envelope, it shows that the market might top, right? Yeah. So आज का जो VIX है, it is Sir, almost at the edge. market might, VIX going up means market might bottom. Yeah. VIX going up मतलब fear बढ़ रहा है, तो market Above the envelope. तो market Correct. right? But right Yeah. now I will not buy here, sir. क्यों? क्योंकि you are below 200 MA. Okay, this works in above when we are above the 200 आप MA. समझे नहीं बात को. I am only saying I am doing what? Buy on dip or sell on rise. अभी हम क्या कर रहे हैं? आजकल what is the stance? Sell on rise or buy on dip? Sell on rise. So why are you looking for buy entries? हम buy थोड़ी करेंगे. Using the Okay. VIX formula, I am not buying here, but I will sell here. ये मतलब है इसका. Okay. Got ये it. बात है. So I can show it to you even on American charts. एक बार देख लो. I'll open the charts of Dow Jones on one, and नीचे I will open the chart of S&P VIX, so that you know that ये, अरे यार थोड़ा मैं उल्टा कर देता हूँ. I will open the S&P VIX on the top. तो मेरी settings यहाँ पे अलग है. S&P VIX आ गया. तो देवांग बेसिकली हम ये करें ना, नेगेटिव ट्रेंड में नेगेटिव ट्रेड लेंगे कंसीडरिंग द विक्स एंड तो पॉजिटिव. करते हैं. That is the goal of the market. ट्रेंड को बस आइडेंटिफाई करो. अगर आपने कर लिया, आपकी लाइफ इजी है. Isn't that the case in the last 1 week? हमें बता दो, चलो राइज हमने सेल ही किया बस. यस राइट. बस देखो, that is the only technical analysis means trend. पकड़े हो, उसको पकड़ के रहो. अरे ये क्यों नहीं हो रहा है यार? Just 1 second. VIX. I think हो गया. अब देखिए, on the top is the S&P 500 VIX and on the bottom is Dow Jones. You can use S&P also, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Both are same. But Nasdaq में नहीं चलेगा because it's a completely different thing. It is like you're trading Nifty IT. तो बेटर है आपको S&P मतलब VIX मतलब you take the index. Nasdaq is not the benchmark of America. ऑब्जर्व करिए मार्केट में डाउ जोन्स का जो था, आप कोई भी चार्ट देखिए, फॉर एग्जांपल दिस चार्ट, यहाँ पर मार्केट ने फॉर एग्जांपल ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद रिकवरी आया,
विक्स इज अबव, यहाँ पर मार्केट ने देखो बॉटम बनाया, विक्स इज अबव, यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया, ये देखिए ये वाला विक्स इज अबव, समझ आया कि नहीं आया? पहले भी देख सकते हो, यहाँ मार्केट बुलिश है, सेंटिमेंट इज बुलिश, तो आपको हाई विक्स पे सेल बाय करना है, बिकॉज दैट विल शो यू एंड ऑफ द डिप. सो वी आर यूजिंग द 10%. Can I go forward, guys? Yes or no? Yes, Lipto, please, if it is clear.